Yeah, I did. I Okay, did so it, ये sir. क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था. You had to do this. And Yeah, I did. what is your answer? So my answer is 5 newtons. What? 5 newtons. All right. So I told you some steps to follow. Yeah. The diagram shows uniform ruler balanced at the center by hanging string and supporting two objects. What is the weight of X? You need to find the weight of X. अच्छा यूनिफॉर्म Yeah. रूलर का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रूलर So uniform. Yes, का sir. मतलब होता है सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ द रूलर. क्या होता है? The center of mass is at the center of the ruler. सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी is at the center of the ruler. So anti-clockwise moments is equals to clockwise moments. ये करना है आपने. Yes. And this is the pivot. Yeah. So it's hanging by a string. ये pivot है. Pivot से ये distance 20 है, ये distance 25 है. मैंने आपसे कहा था सबसे पहले क्या करो? Forces identify करो. So there are two forces. Force Yes. 1 is 4 newtons and force 2 is W. X. Okay, W. Then identify distances. This is distance D1. This is distance D2. Then identify moments. So if this is the pivot, if A is the pivot, then the 4 Newton will cause it to turn like this. And that's Clockwise. clockwise moment. That is clockwise moment, right? Yeah. If the A is the pivot, X will cause the rod to turn like this. That means anti-clockwise moment. So I'll do what? Anti-clockwise is F2 into D2 is equals to clockwise moments. Clockwise moments is F1 into D1. So F1 कितना बेटा 4, D1 कितना बेटा 25, F2 कितना है W, D2 कितना है 20. So W 20. is equals to 4 into 25 divided by 20. 21s are 20, sorry, 4 ones are 4 5s are 5 ones are and 5 5s are. So weight is 5 newtons. Right? Yeah. अच्छा देखो अब एक बात याद रखना. Here was the word balance. Balance लिखा हो, equilibrium लिखा हो, stationary लिखा हो. इन सब का मतलब क्या है? Anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. Anti-clockwise moment is equals to Anti-clockwise moment. clockwise moment, right? So W यहाँ पर आपका बन गया 5. W is 5 newtons. अच्छा जी आगे चलते हैं. So आज हम जो है हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स देखा. हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के एक्सपेरिमेंट तो डिस्कस नहीं किया ना. Right. All right, so I'll just paste something here. I want you to make a note of this. ये नीचे वाला पोर्शन जो है ना इसको छोड़ के ये अपनी कॉपी में जरा अच्छे से बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा. ठीक है? Okay. सर अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसकी. Yeah. इसको अभी आप कर लो ताकि फिर मैं एक्सप्लेन करने में आसानी हो. Okay.
All right, noted. I'm almost done. Just one more line. Come again. Done. I'm almost done. Just one more point is left. One more point is left. All right. Okay. Okay. Done, sir. Sir, is this a paper 4 question? Like related to paper 4? Right. This type of question comes in P4, right? Yeah, okay. And this is how you can verify the principle of moments. Did you make the table? No. You don't have to fill the table, but you have to Okay. make the column headings, right? Okay. Okay. So can you just read through this? Sure. And then Sure. yeah, the procedure, and then tell me in your own words or explain to me the procedure. Okay. So like, should I read it silently or okay? Sorry? Should I read it silently and then explain it to you? Yeah, you just read it and then Okay. you explain it to me. You are teaching me the experiment to investigate principle of moments. Should I explain it to you now? Yes, yes, yes. Okay. Sir, first of all, we need to set up the apparatus and we need to attach the knife's edge, which would act as a pivot. Secondly, we have to balance the rod by adjusting the distances of the weights from the pivot. Okay. Then thirdly, so basically we have to do this like 5 times, like so that the value like is different 5 times each. So what we're going to do is that we're going to change the distances of the system so that we get like 5 sets of answers. So we'll vary and change the distances again and again 5 times, and then we have to find the clockwise and anti-clockwise moments 5 times each. All right. So the procedure says that you need to verify principle of moments. For this, you should first of all know what is principle of moments. And the principle of moments says that for equilibrium, what? For equilibrium, the sum of clockwise will be equal to the sum of anti-clockwise moments, right? फिर आपकी आवाज बहुत पीछे करके आ रही है. अच्छा, दोबारा. So since we are investigating the principle of moments, we should first know the principle of moments क्या है. The principle of moments says that at equilibrium, for an object to be at equilibrium, the sum of clockwise moments would be equal to the sum of anti-clockwise, right? So Yeah. now the thing is that
you will take a stand, right? A sharp knife edge, and then you will put a beam, a uniform beam, meter root, at the center. You will pivot it at the center. You will attach two loads, W1 and W2, right? Initially, when you attach the loads, the beam, the ruler will not balance. The ruler will not balance. ठीक है, balance नहीं होगा ruler. अब ruler balance नहीं हो रहा तो क्या करें भाई? Ruler balance नहीं हो रहा, weights तो हम change नहीं कर सकते, जो है वही है. हम weights को adjust करेंगे. हम distance, let's say D1 को हमने constant रखा है, D2 को हम adjust करेंगे, आगे लेके जाएंगे, नहीं हो रहा फिर पीछे लेके आएंगे. We'll adjust until and unless we have a balanced meter rule. ठीक है? अब आप क्या करोगे? जब आपने इसको बैलेंस कर दिया, so definitely you have some value for W1 and the D1, right? Then you have some value of W2 and D2. This is where it is balanced, right? So Yeah. this will give me what? Anti-clockwise moment. And this will give me what? Clockwise moment. Clockwise moment. W2 clockwise. Okay? Clockwise. So I'll find that the two values, the two moments, the clockwise and the anti-clockwise moments is the same. Since it's horizontal, it's in equilibrium. So the clockwise and anti-clockwise moments are the same. Then you might think that sir, ये तो coincidence हो सकती है, बस ऐसा हो गया, जरूरी थोड़ी है. आप क्या करो? आप यही weights fix करो. Now change the position of W1. Let's say W1 पहले यहाँ था, अब इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया, right? So you have a new value for D1, ठीक है? And now adjust, इसको आगे ले जाओ या करीब ले आओ, adjust W2. क्या करो बेटा? W2 adjust. So now you will have a new value for W1 and D1. When you find W1 into D1, you plug in it here. Now you adjust D2 and W2 into D2 will give you another value. Since it's horizontal, it's balanced, it's in equilibrium, then the sum of clockwise, the anti-clockwise moment would be equals to the clockwise moment. Okay? आप फिर repeat करो ऐसे 5 different times. Whenever you have to prove an experiment, you have to repeat it at least 5 times and then plot a graph. फिर एक दो रीडिंग पे वेरीफाई नहीं हो जाती. ठीक है? अब समझ आ गया? जी सर. अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्या बोलते हैं? Center of gravity. ग्रेविटी. Center of gravity. अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हेडिंग दो एंड मेरे साथ साथ जरा चलना, ठीक है? So just give me 1 minute.
अच्छा जी, सो देखो बेटा, ये आपके पास एक मीटर रूल है दैट यू हैव पिवटेड एट द सेंटर। हाँ, अब जी ये सर। इक्विलिब्रियम पे बेटा, कैसा ये इक्विलिब्रियम पे, आप मुझे बताओ, इट हैज अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स इन इट ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें, एंड एवरी पार्टिकल वुड हैव सम मास। it this meter rule has a lot of particles ना। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? जी सर, यस। So this meter rule has a lot of particles, and when this has some particles, these particles must possess some weight, some mass, some weight. Yes. यस। Now I cannot draw all the particles, right? सारे particles तो मैं draw नहीं कर सकता, मैं कुछ particles draw कर लेता हूँ। Let's say 1, 2, 3, 4, मैंने इस रूल के 4 पार्टिकल्स ड्रॉ किए। हर पार्टिकल का वेट है, मास है, तो इसीलिए हर पार्टिकल का वेट भी होगा। हाँ, सो इसका वेट आई विल कॉल दिस W, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। नाउ दिस इज आल्सो W। इसी तरीके पे ये भी क्या है बेटा, W। या ये भी क्या है, W। सबके सेम वेट है। नाउ ऑल दीज particles have weight acting downwards, but it's not turning clockwise. Not turning clockwise. Neither it's turning anti-clockwise. हाँ, turn ही नहीं हो रहा, no turning। क्या हो रहा है बेटा, no turning। नोट। जब टर्निंग नहीं हो रही तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और क्लॉकवाइज मोमेंट्स सेम है। हमने एक और भी चीज पढ़ी थी कि जब टर्निंग नहीं होती, जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती है कि मोमेंट्स भी जीरो है, सम ऑफ मोमेंट्स भी क्या है, जीरो, एंड सम ऑफ फोर्सेस भी क्या है बेटा, जीरो। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए, और वो क्या है कि देखो, ये जो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, जाहिर है the total weight that is acting downwards is what, 4W। total downward weight कितना act कर रहा है बेटा, 4W। yes or no? ठीक है, यस। but it's not coming down, it's not falling down। तो इसका मतलब है जो 4 न्यूटन्स का या 4W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से कोई डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही। दैट मीन्स इसके ऊपर कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एंड that is applied by the pivot over here, that is applied by the pivot over here। इसका मतलब है ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था 4W, इसको किसने बैलेंस कर दिया बेटा, फोर्स ऑफ द पिवट। यस और नो? अगर ये पिवट ना यस। होता तो ये गिर जाता, है ना। जी सर। तो इसका मतलब है अगर ये गिर नहीं रहा, ये बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब है जितना डाउनवर्ड फोर्स था उतना ही क्या है, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड नहीं। फोर्स। ओके। तो ये जो पिवट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कितना प्रोवाइड कर रहा है बेटा, कितना प्रोवाइड कर रहा है। 4W। अब यहाँ एक बात और देखिएगा, जो 4W तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर ये जो 4W है इसमें से कुछ इधर ऐड कर रहा है। It's not all acting at one point, but this 4W is being applied just at this one point, या and it's still balancing this, and this. Yes or no? तो जो यस। 4W का इफेक्ट है वो बैलेंस हो रहा है पिवट से। किससे बैलेंस हो रहा है बेटा, पिवट सर। इसका मतलब है 4W का इफेक्ट कहाँ था, 4W का इफेक्ट इस पॉइंट पर, सेंटर। 4W का इफेक्ट कहाँ था, इस पॉइंट पर था, राइट। दिस इज द पॉइंट इन द मीटर रूल where the weight of the meter rule acts, where all the weight of the meter rule acts। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, सो मैं यहाँ इसके लिए लिख लेता हूँ
center of gravity of an object is defined as the point through which its whole weight appears to act. Center of gravity center of gravity of an object of an object is defined as the point is defined as the point is defined as the point through which through which its whole weight its whole weight appears to act. Sir, जब forces balance नहीं होंगी तो then there won't be any center of gravity, right? Say it again. I'm saying that when the forces aren't balanced, then there won't be any center of gravity, right? There would be unbalanced forces और बैलेंस फोर्सेस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता. ये जो मैंने आपको बैलेंसिंग दिखाई ना, ये मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि देखो ये रूलर अगर मैं इधर इस पॉइंट पर पिवट देता तो ये कभी बैलेंस नहीं होता. अगर मैं इस पॉइंट पर पिवट देता ये कभी बैलेंस नहीं होता. ये गिर जाता. अभी इस पॉइंट पर बैलेंस हो रहा है. ठीक है, इस पॉइंट पर बैलेंस हो रहा है. इसका जितना भी वेट हो, ये 4 न्यूटन जो 4000 न्यूटन, ये इस पॉइंट पर बैलेंस हो रहा है. तो जाहिर है अगर 4000 न्यूटन इसका वेट होगा तो इट वुड फॉल विद द 4000 न्यूटन फोर्स डाउन. लेकिन इसको बैलेंस किसने किया? पिवट ने. वो जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको बैलेंस किसने किया? पिवट ने. तो इसका मतलब पिवट भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है. अब यहाँ फोर्सेस बैलेंसिंग में नहीं समझा रहा, यहाँ मैं ये समझा रहा हूँ सिर्फ यार वो जो इतना सारा इसका वेट था, वो जो इतना सारा इसका वेट, यहाँ मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि वो इतना सारा जो इसका वेट था वो इस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है. ठीक है, एक मिनट देना मुझे बेटा. ऑलराइट, ये बात समझ आ गई बेटे? जी सर. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब एक चीज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये डेफिनेशन मैंने इसकी ऑफिशियल लिखवा दी. appears to act for any orientation for any orientation of the object.
ऑलराइट, अब एक चीज होती है सेंटर ऑफ मास, एक चीज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तो ये डेफिनेशन थी जो कि आपने लिख ली। अब एक चीज है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी जरा देख लेना। सेंटर ऑफ मास, center of gravity is sometimes confused with center of mass, but for our case, we'll consider the center of mass and the center of gravity as the same. ये मैं स्टेरिक करके लिखवा रहा हूँ, ये important Sorry, point है। sir, can you repeat it again, please? For our case, center of mass, center of mass and center of gravity is considered the same, is considered to be the same. ओके, क्लियर। अब एक चीज और, सेंटर ऑफ मास की जो वैसे डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ, पूछने को आते नहीं है, लेकिन जो करेक्ट डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, और आप अपने लेवल पर दोनों को एक कह सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, सेंटर ऑफ मास, इट इज द पॉइंट इन अ बॉडी which moves, is the point in a body which moves. It is the point in a body which moves, and how does it move? Which moves as if the entire mass of the body, which moves as if the entire mass of the body, mass of the body existed at that point. बात समझ आई? जी सर। ये इसकी डेफिनेशन है। ऑलराइट, अब सेंटर ऑफ मास को डिटरमिन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो सकेगा। सेंटर ऑफ मास हमारे पास, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास बोल रहा था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, अगर आप फाइंड करना चाहें यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स का, यूनिफॉर्म थिकनेस वाले ऑब्जेक्ट्स का, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स का, हाँ, सो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। और अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहें इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स का, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिनकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म है, तो उनका आप फाइंड कर सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट दैट्स फाउंड यूजिंग प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट, दैट्स फाउंड यूजिंग प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये लिखवा देता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, center of gravity for objects with uniform density, uniform thickness, and regular shape.
and regular shape is its geometrical center ठीक है बेटा, geometrical center, बात समझ आ रही है? And it may lie outside the object. Got it? So regular Yeah. shapes का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक डिस्क है, हाँ, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका ये ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। अगर आपके पास एक रिंग है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा बेटा? इसका ये ज्योमेट्रिक सेंटर। बात समझ आई? जी सर। सो विल कीप इट टिल हियर, क्योंकि हमारी क्लास किसी भी सेकंड में खत्म